فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. I will be your host for this evening. I will be supported by my co-host Mr. Nafar Hussain, hosting this event on a topic which has become more relevant than ever before: data privacy and cyber security. Because today we have gathered here with us some of the sharpest minds of experts and thought leaders who are going to demystify the world of data privacy and cybersecurity. My name is Nafar Hussain. I am part of elected members of ICAP chapter and partner in AMK Global Chartered Accountant. So I will be happy to assist Mr. Asad as a co-host for today. Thank you so much. Financial Free Zones, Abu Dhabi Global Market Regulations of 2021 and Dubai International Financial Center Law number 5 of 2020. These two laws, of course, ADGM and of DIFC are only applicable within their own jurisdictions, whereas the federal law is applicable all across the mainland and all others. So, at the first end, there is a concept of data subject. I'll explain which data subject. For the time being, only two of the free zones develop the laws for their own implementation. Now, there is a very beautiful interrelated three parties on the controller. Then some fundamental concepts. Then I'll discuss the rights of the data subjects. Then consent. Then more importantly, what is required to become compliant with the legal requirements. Assalamualaikum and good evening to all dear friends. And thank you, sir. Privacy profession. Mr. Said and gain an understanding of the underlying concepts and principles. Before we start and before I invite, and finally we will have assets, we will have data privacy compliance challenges and opportunities, and at the end we have kept something very interesting and different for all. Let me know, we can come here. 125,000 euros to a company. It is my pleasure to introduce our next speaker, Mr. Saifullah Khan, a true expert in the field of international trade policy and policy law with over 2 decades of experience serving the clients all over the world. Good evening to everyone. Okay, so Saeed has actually explained you the whole basic idea of the law, what the law is all about. What the authority actually has determined at the end. The authority concluded that the processing of biometric data is sensitive information and consent is essential. So if you are processing my data without my consent, even if there is no harm to me, still it is illegal on your part. So the takeaway is the data controller must be able to demonstrate that he has obtained explicit consent. The consent could be verbal, but that too must be able to be demonstrated as an evidence in case of any potential action or complaint. This is extremely important, I tell you. Know the importance of the data. We already know that our data is the petroleum. It's not petroleum anymore. Now it's our data, it's what matters. And the customer, the stakeholders, they know how much important this is. So of course, if your company is compliant, your customer will be loyal to you, they will be with you, and this is a good opportunity. Happy employees are going to make the customers happy, because if we only talk about happy customers and the employees are miserable, it doesn't make any sense, right? So happy employers, happy employees, happy customers, then what do we have? We have a sustainable business. And if we have a sustainable business, I think it's also, everything is like, it's a better world. So it's very simple and straightforward. And continued supporting and promoting this Pakistani Chartered Accountant till 2012, when we celebrated Golden Jubilee of ICAP in Dubai, which was attended by His Highness Sheikh Nayan as a special guest. In September last month, I completed 50 years of my qualification of ICAP. और सारी चीज़ें और मैंने जो जर्नी शुरू हुई आई कैप के अंदर मेरे मेंटर को बैठे हुए जो मुझसे पहले अवार्ड लेके गए आसिफ कलीम साहब he brought me in ICAP in management committee, and now alhamdulillah I am the council member for ICAW for Middle East, and it goes through all through ICAP.
Thanks for giving, thanks for participating. We always need you. And then we just needed to highlight the events that we have done in the last subcommittee. The tenure was around about 10 months under the leadership of Mahak. We organized a iftar event where around about 150 people turned up. We have a wonderful team who has organized this event. They always organize the events which are relevant, and they put lots and lots of effort in arranging these events. Thank you very much. I would like to say that when there is a law, we must always comply with the law. लॉ बनते हैं कंप्लायंस के लिए, लेकिन लॉ बनने के दोनों मकासद हैं। जहाँ वो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, नेचुरल पर्सन को एम्पावर करना चाहते हैं, वहाँ पे वो बिजनेस एनेबलर भी है। बेसिकली वो एक बैलेंसिंग फिगर है कि अगर वो डेटा सब्जेक्ट्स का राइट है कि वो उसका डेटा प्रोसेस करें, तो वो एक बैलेंस तरीके से एक लॉ के तरीक़ेकार, एक कायदे के मुताबिक उसको यूज़ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ आ रहे हैं दो तरह से, दो तरीके का, दो मकासद के लिए आए। नंबर 1 कि डेटा सब्जेक्ट को, नेचुरल पर्सन को एम्पावर कर रहा है कि उसकी मर्जी के मुताबिक डेटा यूज़ हो। दूसरी बात, कंट्रोलर को भी इजाज़त दे रही है कि आप डेटा इस्तेमाल करें क्योंकि आज के दिन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रेगुलेशन कायदे के मुताबिक, तरीके के मुताबिक, ताकि डेटा सब्जेक्ट को उससे नुकसान ना हो। पहले तो मैं बताऊंगा ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जो है इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ डिफरेंट कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हो चुका है दुनिया के बेताशा मुल्कों में। और अगर आप गल्फ़ की बात करें तो जीसीसी के अंदर भी बहुत से मुल्कों में डाटा प्राइवेसी का लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। यूएई में डाटा प्राइवेसी लॉ इज़ इन इफेक्ट बट नॉट इन्फोर्सेबल। कानून आ चुका है 2 साल पहले, बट उसके जो इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन है वो आने वाले हैं। बट व्हाट आई फोरसी इज़ दैट यू विल सी द इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस टू बी इंट्रोड्यूस्ड वेरी वेरी सून, बिकॉज सऊदी अरेबिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स रेगुलेशन लास्ट मंथ। तो सऊदी रेगुलेशन आने के बाद इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन सऊदीया में तेज़ी से हो रही है। अब यूएई के पास मेरे ख्याल में टाइम कम है और इनको इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन इशू करने पड़ेंगे और जल्दी करने पड़ेंगे। ICAP ने ये जो विजिलेंस लीगल कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर ये किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि ICAP के मेंबर जो हैं आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर CFOs हैं, डायरेक्टर फाइनेंस हैं, कमर्शियल हेड्स हैं, COOs हैं, ये डिसीजन मेकर्स हैं, C लेवल के जो मैनेजमेंट टीम है। तो इनको इस बात का नॉलेज देना, इनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग देना, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करना कि ये लॉ है क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस कंपनी के लिए क्या हो सकते हैं। तो दैट इज़ ए रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडे। और मेरा ख्याल है जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत अमेजिंग थी। आज का जो इवेंट है ICAP का जो हुआ वो बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर। आपको पता है कि ये डिजिटलाइजेशन की वर्ल्ड है। इन डिजिटलाइजेशन दो चीज़ें बहुत अहम है। एक जो साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत अहम अंसर है। आपको सुना होगा कि हैकिंग्स और ये सब सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसकी वजह से हर प्लेटफॉर्म और हर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो विजुअल है ऑनलाइन, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी। और दूसरा सबसे अहम जो टॉपिक है वो डाटा सिक्योरिटी का है। जैसा कि आपको पता है कि GDPR आ चुका है। डाटा सिक्योरिटी का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका पर्सनल डाटा आपकी इजाज़त के बगैर शेयर नहीं किया जा सकता। ये लॉ भी है, इन्फोर्स अब UAE के अंदर हो चुका है। सो ये दो एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर ICAP ने ये सेमिनार करवाया, जिसके अंदर आज का इवेंट जो ICAP ने करवाया वो डाटा प्राइवेसी के बारे में था। और इसमें स्पीकर्स ने बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज दिया और हमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ों का पता चला कि कस्टमर का जो डाटा है उसको सिक्योर कैसे रखना है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। अगर हम उसको फुलफ़िल नहीं करते तो उस पर कितनी हैवी पेनल्टीज़ आती हैं। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इस पर पेनल्टीज़ आई हुई हैं। और इस अभी UAE लॉ भी आ रहा है, तो इसीलिए हमें डाटा प्राइवेसी पे फिल फोर अमल करना ज़रूरी है। Mashallah, that was very wonderful event about data protection, security and compliance organized by ICAP. और as a finance manager हमें इस चीज़ की बहुत awareness होनी चाहिए, because we have access to our data regarding director, regarding companies, और इसकी protection is very important for everyone जो इसके पास access है। और speakers ने बड़ा अच्छा elaborate किया कि why we need to
aware about security and protection. आज हम ICAP यूएस चैप्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि हम सब अकाउंटेंट्स हैं और हमें हमारा वास्ता रहता है डाटा से, और अगर हम डाटा की प्राइवेसी नहीं रखेंगे तो वी कैन फेस द लीगल केसेस से बचने के लिए हमने जो है ICAP यूएस चैप्टर ने डिसाइड किया कि वी शुड हैव इवेंट ऑन डाटा प्राइवेसी। और हम सब लोगों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे मेंबर्स, सीनियर स्पॉन्सर्स जो कि इस इवेंट में आए और उन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल करने में हमारी हेल्प की। और सबसे ज़्यादा मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए और हम हमेशा हमारे सारे इवेंट्स को कवर करते हैं। और इंशाअल्लाह कोई भी इवेंट हम जितना मज़ीद सक्सेसफुल कर रहे हैं, जब तक मीडिया नहीं दिखाएगा उसको तो दुनिया को नहीं पता चलेगा। तो ये हमारी ICAP यूएस चैप्टर की सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है, और जो हमारा टॉपिक है डाटा प्राइवेसी, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी था कि ये मीडिया हमारे जो है ना वो चीज़ों को कवर करे। Wonderful event organized by ICAP, Asif Saab and Yasir Saab. The topic is very relevant, and data breach and data privacy is something very important, and we should be very careful about how we manage data, how we control data, how we process data. And some of the speakers really highlighted some great points and how this has affected not just here in Europe. Google and Facebook have faced these issues as well. So we need to be really careful with UAE data protection. Laws are also changing, and we really need to be careful and make sure that we are compliant. And compliance is very important for all of us. I would like to thank Mr. Yasser Gadit for inviting me, and I would like to thank also ICAP for organizing this useful event. The event talks about cyber security and data protection, which is now becoming a very popular topic and very big challenge in all over the world. It is important to increase the awareness of people about this subject, and to protect the data of the users and to prevent any threats. I had the chance to take part in a data privacy and cybersecurity event. I would like to say thank you to Yasser for this opportunity. And I am very happy that I had the chance to talk about how we connect wellness and businesses and why it is so important to strengthen the bridge in order to provide a better and a different corporate experience. My suggestion is that I would like to see more companies that are investing more in their employees, and also they take more of their leaders, because as we all know, leaders set the tone. And leaders have the power to shape the company culture in any organization. And as we know, the company culture can be toxic or can be healthy. ICAP पाकिस्तान UAE चैप्टर ने मुनक़्क़द किया है, और ये वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है, जैसा कि हम डिजिटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें चाहे इंडिविजुअल्स हों या कंपनीज़ हों, उनको डाटा प्राइवेसी कैसे उन्होंने करनी है, साइबर क्राइम से कैसे अपने आप को बचाना है, उसके मुतल्लिक़ एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो तफसील बताई है कि डाटा कैसे जो है वो प्रोटेक्ट करना है और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होने चाहिए, ताकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो हम इंडिविजुअल्स हैं वो नए आने वाले जो चैलेंजेस से आगाह होते रहें। बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ सीक्वेंस और आगे आनी चाहिए। पहली सीक्वेंस तो ये आनी चाहिए कि इन लॉज की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ये मिसिंग था आज के लेक्चर, आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर। दूसरा, कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन हैं जिनकी मदद से हम इन लॉज को, स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा, जो प्रैक्टिसेस हैं CFOs की, उन प्रैक्टिसेस के अंदर क्या चेंजेस लाई जाएँ जिसकी वजह से ये डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के जो लॉज हैं ये उनसे अलाइन हो सके। और क्योंकि एंड ऑफ द डे इफ़ देयर इज सम वायलेशन, तो उसके जो फोरेंसिक होना है, फोरेंसिक के अगर कैपेबिलिटीज़ या लीड्स उनके प्रैक्टिस में इंटीग्रेट नहीं हुई, तो देन देयर विल बी ए बिग गैप। तो माय सजेशन इज़ कि उन प्रैक्टिसेस लॉज को भी एक सेशन किया जाए जो CFOs को बताया। रहमान रहीम जी, ICAP चैप्टर UAE ने ये एक बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें इन्होंने साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है, ताकि जो नया लॉ UAE में नाफिजुल अमल है उसके बारे में बिज़नेस कम्युनिटी और फाइनेंस कम्युनिटी को आगाही दें। और इस इवेंट का रिज़ल्ट बड़ा पावरफुल और बड़ा इंफॉर्मेटिव है।
Assalamu alaikum. This event was organized by the Managing Committee of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. With the increasing requirement on data privacy and cyber security, the Managing Committee came up with the idea of organizing this event on a very important topic to create the awareness amongst our members. It was amazing to see that 200 participants, more than 200 participants actually participated in this event. And then we, as a managing committee, promised to bring more such events in the future.